Oh man, this place is amazing. Welcome back to the channel, guys. My name is Sayanath. I'm a travel cinematographer, filmmaker based out of New Delhi. And right now, where I'm standing is one of the most amazing places that you can witness in India. It's called Dzukou Valley. This place is something out of a dream story. एक सपनी जैसी जगह है ये. This place is so amazing, guys. Stay tuned till the end of the video because I'm gonna tell you how to come to Dzukou Valley, what all you can do in Dzukou Valley, and the amazing, magnificent sunset and sunrise that one should witness in Dzukou Valley. एयरपोर्ट से हमें किगवेमा तक हमें टैक्सी मिल गई यहाँ से. थोड़ा महंगा है, 900 रुपये हमने पर पर्सन दिया यहाँ पे. अब क्या करें, मजबूरी है. तो वी हैव जस्ट रीच मेन कोहिमा टाउन एंड कोहिमा से हमें थोड़ा सा कैश वैश विड्रॉ करना था. तो अगले 4-5 दिन के लिए हम कैश नहीं निकाल पाएंगे. एंड मुझे साबुन लेना था, कुछ बेसिक टॉयलेटरीज लेनी थी. एंड नाउ वी गोना गो टूवर्ड्स किगवेमा. How far is Kigwema from here? So half an hour यहाँ से Kigwema है, and then it's so Kigwema is very close to Kohima and it's a good starting point for the Dzukou trek. तो हमने कहा कि भैया कोहिमा रुक के फ़ायदा तो है नहीं, तो कल का दिन भी बचेगा एंड थकावट भी कम होगी. गुड मॉर्निंग फ्रॉम Kigwema विलेज. अभी हम अपने होम स्टे में हैं. And the plan is that we got a sumo which we're gonna share with 2 other travelers, so the cost comes down a bit and we're gonna start our trek. बारिशों से आती हो तुम. So from here the trail to Dzukou Valley starts. अभी यहाँ से कुछ, यह कितना किलोमीटर ट्रैक था हमारा? 8-10 किलोमीटर के आसपास. सुखा मानो. Wait. Sukha manu. What that is? Sukha manu. Yeah. What does that mean? How are you? By the way, she's from Malayali. Yeah, exactly. बस तुम और हम, तू पास तो अपना सा लगे, ये सारा जहां सपना सा. So we have just reached the middle point of Dzukou Valley and ये बैग बहुत हैवी है भाई इसके साथ. तो अगली बार मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना बैग और अपने लाइफ के गम छोड़ के आइए, तो आप सुकून से जा पाएंगे. ये देखिए, ये तो खुश क्यों लग रहे हैं दोनों, क्योंकि इनके पास कम सामान है. वैसे इन्होंने हमारा एक्स्ट्रा सामान ले रखा है. थैंक्स फॉर दैट स्मॉल बैग. नथिंग. I don't know, stones. So actually she has a camera, some water bottles and हमारा खाना भी. तो अगर ये नहीं होते तो पता नहीं कैसे होता. So you can see all these barren trees on top of me. This completely barren. जहाँ पे थोड़े पेड़ बचे थे वो एक्चुअली जल गए हैं. यहाँ पे Dzukou Valley में फॉरेस्ट फायर इज़ अ वेरी कॉमन चीज़. वेरी इंसेन एंड इट्स ऑल ग्रीन. अभी धीरे धीरे अभी Dzukou Valley और खुलेगा, अभी खुला नहीं है. आगे जब हम जाएंगे और खुलेगा. इट्स गोना लुक मोर प्रिटी. Just reach the Dzukou Valley viewpoint. यहाँ पे लगाएंगे या फटाफट अपना टेंट लगाते हैं. सो दिस इज़ द डॉर्मेट्री ऑफ Dzukou रेस्ट हाउस. आप देख सकते हैं बिल्कुल ही
ऐसे यहाँ पे कभी किसी ने लाश वाश डाली होगी तो वैसा वाला जगह है यहाँ पे। और यहाँ पे 100 रुपये आपको डॉर्मेट्री मिलता है। तो डॉर्मेट्री मतलब फ़र्श पे आप सोइए और डी लिख दीजिए दीवारों पे, डॉर्मेट्री हो जाएगा। तो एंड इसका 100 रुपये है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप या तो अपना खुद का टेंट लेके आइए जिसका 200 रुपीज़ चार्ज है, या तो फिर आप यहाँ पे टेंट लीजिए। आई मीन यू कैन borrow a tent over here which is also around some 300 रुपीज़ के आसपास। अभी हम एक्चुअली में ज़ूकू वैली में जा रहा हूँ जहाँ पे हमारा टेंट लगा हुआ था, which is somewhere over there is basically the viewpoint, but the main Dzukou Valley is down the valley, which is almost a 2-hour hike. Oh man, this is damn amazing. I've never seen a place like this actually. Fantastic. अभी सनसेट होने वाला है एंड मेरा जो टेंट लगा हुआ है ज़ूकू रेस्ट हाउस वो यहाँ से काफ़ी दूर है, तो अंधेरे में जाना पड़ेगा। टेंशन भी होती है कि कोई भूत बात ना हो यहाँ पे। वीरान है इस जगह पे, सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है। एटलीस्ट 20 किलोमीटर के दायरे में तो कोई नहीं है, और 50 किलोमीटर के दायरे में भी सिर्फ 10 लोग ही हैं जो कैंप साइट पे रुके हुए हैं। वी आर नॉट अलाउड टू एक्चुअली कैंप ओवर हियर और स्टे हियर फॉर द नाइट स्टे, बट वेल आप लोगों के लिए मैं क्या क्या नहीं करता हूँ। यहाँ पे भैया खाना बिल्कुल बुफे सिस्टम मिलता है। वेज का कितना है भैया? हाउ मच फॉर वेज? 250 एंड हाउ मच फॉर नॉन वेज? 300। सो 50 रुपये एक्स्ट्रा कर देंगे आप तो आपको नॉन वेज मिल जाएगा। तो खासा वो लेवरेज ले लीजिएगा। Good morning from Dzukou Valley. It's 5 in the morning and it's super cold right now, and we are planning to go down again to the valley, all the way down there to get some more beautiful shots. So Dzukou early morning and late night is actually very cold, and it's not freezing, but the cold over here is very different to the cold that you feel in Himachal, Uttarakhand and Ladakh. It's very biting, so it just pinches you very hard. So in Dzukou, trust me, you don't want to be left alone or lost, so don't do it like alone. Abhi me and Sam are here, so we are able to just go wherever we want. But if you're alone, yesterday also when I was alone, and I did not just take any route, because at a time Dzukou Valley looks same from wherever you look, so that's a very scary thing. It's like a desert, but a green huge desert with hills, so don't get lost. And also because no one comes over here, the entire trail is not cleared and it's very dense, so make sure what I mentioned, that you have to wear full sleeves, like cover your hands also. No shorts, no 3/4, everything should be full. Shoes, no sandals, because this is not something that you want to do every day. Look at that, it's just completely covered till her head with bamboos, and these are very sharp, guys. Sun finally, woohoo!
नहीं नहीं है ये बातें वही, फिर इस मोड़ पर हम मिले हैं, न जाने अब मिलेंगे हम कभी, तो रुक जाओ एक पल यहाँ पे। ये नर्म चादरों की सिलवटें तुझे अभी बुला रही हैं, न जाओ दूर इनसे, कहे ये सुकून कहाँ पे है हासिल दिल को मेरे, ये है। It's mesmerizing, but because all the bamboos have a lot of mist inside it, like mist on them, and the sun is like melting it out. So just below my knees, everything is wet. Like the shoes are wet, the socks are wet, my pant is wet, and everything. But coming down here since morning is such a great feeling. How did you find the place? Beautiful, amazing. Oh, did you start recording? Yeah. Let me think of something. No, on a general basis, like you thought like Dzukou Valley is mostly of green moss, right? So you didn't know this thing that it's like made out of bamboo. So I didn't know. So from the pictures, I just thought that it's covered with some sort of green moss or some sort of very small plants. Never in my wildest imaginations I would have thought there are these small bamboo shrubs. These are small bamboo shrubs. I've never even seen small bamboo shrubs. Bamboo shrubs. Same Bamboo here. is usually Tall. supposed to be tall. Yeah. Hey, bye-bye. Leaving from I stayed for last 2 nights Dzukou Valley, and now the hike back to the base camp to hitchhike ride. हमारी टैक्सी बुक नहीं है यहाँ से, तो वो हमें सॉर्ट करना है. चलो guys, see you. Have a great day. We'll stay in touch. We'll stay in touch. Yeah. Sir, salamati. Deep traveling. Salamati, salamati. So, अब हम पहुँचे हैं अपने होम स्टे में, एंड हमारा सफ़र यहीं पे ख़त्म होता हुआ. आप लोग अपना प्यार देते रहेगा, और बाकी सलाम दुआ आप भी कीजिए, मैं भी कहूँगा. ठीक है जी. I'll see you next time. I love you all. Adios. Signing out.